Hello friends, welcome to Exploring Goals. समस्त को स्वागत आज वीडियो को. This one is very important for B.Ed and M.Ed students and those who are preparing for Odisha Education Service as well. So educational psychology रो आमे discuss करूँ different parts like theories of learning, laws of learning ये सब आमे डिस्कस करिचे ऑलरेडी. तो आज आम देखा नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग को. सो फ्रेंड्स जो मैंने चैनल अच्छे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करनी एंड साइड में बेल आइकन हिट करनी सब लाइव अपलोडेड वीडियोज पाइबा. नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग जहाँ ये सब एग्जाम इंपोर्टेंट. लाइक कमेंट शेयर योर लाइक्स योर कमेंट्स एंड शेयर योर सब्सक्रिप्शन दोज आर रीइंफोर्समेंट फॉर मी. निश्चित मत एनकरेज कर आहरी एमती वीडियो आने को. सो लेट्स बिगिन. Learning is the process by which an individual acquires knowledge, attitude, and skills that are necessary to meet the demands of life. This can be a definition, and the easiest definition. Learning is the process by which an individual acquires knowledge, attitudes, and skills that are necessary to meet the demands of life. Friends, आज एंड रे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पूरा एंड रे मुझे रखी जहाँकि आज जहाँ भी पढ़ा ता सहित रिलेटेड. व्हाइल टचिंग ए बर्निंग कैंडल ए चाइल्ड गेट्स बर्न्ड एंड ही विथड्रॉज द फिंगर को विथड्रॉ करनिए जिते से बर्निंग कैंडल को टच कला. व्हेन ही फेसेस ए सिमिलर सिचुएशन अगेन ही विथड्रॉज हिज फिंगर्स फास्टर. नेक्स्ट जो पुणी सेमती गोटे सिचुएशन है सी आहरी जल्दी ता हाथ को विथड्रॉ कला. ग्रेजुअली ही लर्न्स टू अवॉइड नॉट ओनली द बर्निंग कैंडल बट ऑल्सो अदर बर्निंग थिंग्स. तो सबू जलुवा जिनस को अवॉइड करवा शिखीगला. द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज दस चेंज्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस. दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉमनली नोन एज लर्निंग. तो जहाँ चेंज इन बिहेवियर आसला मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है as a result of experiences the child जहाँ ता लाइफ रे फेस कला ता जो मोडिफिकेशन है ताको आमे लर्निंग कहि परिबा. Thus learning means change in behavior or behavior potential that occurs as a result of experience. Learning can result from both vicarious and direct experiences. Vicarious means observing someone and learning from that observation and not being directly involved in the experience. Means विकारियस लर्निंग माने आमे कहि परिबा लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक. अन्य मानन को देखिकी अन्य मानन को एक्सपीरियंस रो निजे जानिबाटा को कहूछ आमे विकारियस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस माने जेमति चाइल्ड निज हाथ को पोड़ी देला जाली देला तापर जाई सिखिला विथड्रॉ करी आनिबी नै आसीबी. फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड लर्न्स हाउ टू क्लैप हैंड्स बाय सीइंग समवन एल्स डू इट. अन्य को देखिला जे अन्य जने केमति करूछि जेमति नॉर्मली चिल्ड्रन माने करंती मिमिक्री. अन्य को देखिकी सिखिबा कॉपी करिवार कॉपी करिकी अन्यठू शिखिबा. लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड लर्न्स टू राइट बाय प्रैक्टिसिंग राइटिंग. ए चाइल्ड नॉर्मली लर्न्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स टीचर्स एंड द एनवायरनमेंट. सो ये माने होउचंती टीचर जहाँ चाइल्ड को किसी शिखांती बा लर्न करिवारे हेल्प करंती. पेरेंट्स टीचर्स एंड द एनवायरनमेंट वाइटल आहरी बहुत जिनस अच्छी जमीक पियर्स फ्रेंड्स हूँ बा कौन से सिचुएशन रू शिखा इनसीडेंट रू शिखा. ओके. डेफिनेशन ऑफ लर्निंग बाय गार्डनर मर्फी फास्ट कौन कही. द टर्म लर्निंग कवर्स एव्री मोडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. सेमिति हेनरी पी स्मिथ कहते लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. Crow and Crow कहते learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude. It involves new ways of doing things and it operates in individual attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive changes in behavior. It enables him to satisfy interests to attain goals. तो ये हूँ तीन टा इंपोर्टेंट डेफिनेशन काफ़ी आम जो लिखुचे जिते आमर नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग रिलेटेड क्वेश्चंस किसी आसूची एग्जाम रे. तो तीन टा डेफिनेशन काफ़ी ताको हाईलाइट करके लिखिबार अछि. नेक्स्ट नेचर ऑफ लर्निंग कौन कौन रोचे. लर्निंग इज यूनिवर्सल. सो पॉइंट्स गुड़ा इंपोर्टेंट. ये सब पॉइंट्स इंपोर्टेंट एंड पॉइंट्स को मुझे बोल्ड करिवार भी रीजन अच्छे आम भी हाईलाइट करिपारिबा लिखिबा टाइम रे जेमति क्लियरली देखा जिवो बा अंडरलाइन करिपारिबा. लर्निंग इज यूनिवर्सल. एव्री क्रिएचर दैट लिव्स लर्न्स.
Man learns most. The human nervous system is very complex, so are human reactions, and so are human acquisition. Positive learning vital for children's growth and development. The learning is universal. Universal माने सबू जी जीव जार लाइफ अच्छी से निश्चित रूपे शिखिब ही शिखिब किसी ना किसी किंतु सबुठ अधिक शिखिब ह्यूमन कहीं ह्यूमन नर्वस सिस्टम अधिक कम्प्लेक्स ब्रेन अधिक मैच्योर सो आर ह्यूमन रिएक्शंस सो ह्यूमन ऑल्सो ह्यूमन रे एक्विजिशन बा परसेप्शन अधिक हो पारे सो पॉजिटिव लर्निंग इज वाइटल फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नंबर 2, लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस. लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट को आम विकारियस कहूचे जमी अन्यर एक्सपीरियंस रु शिखिबा. Number 3, learning is from all sides. Today, learning is from all sides. Children learn from parents, teacher, environment, nature, media, etc. Okay. Number 4, learning is continuous. It denotes lifelong nature of learning. So, learning is lifelong process. Every day, new situations are faced, and the individual has to bring essential changes in his style of behavior adopted to tackle them. तो प्रतिदिन नुआ नुआ सिचुएशन आम फेस करुचे एंड आमर निजर जहाँ बिहेवियर बा जहाँ लर्नड ऑलरेडी लर्नड जिनस अच्छी ताको आम मॉडिफाई करबा दरकार एंड स्टाइल ऑफ बिहेवियर रे चेंज करबा दरकार इन ऑर्डर टू टैकल ऑल द सिचुएशंस दैट आर न्यू इन आवर लाइफ. लर्निंग इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम मदर्स womb to tomb. Number 5, it results in change in behavior. It is a change of behavior influenced by previous behavior. The change in behavior influenced by previous behavior. माने ये प्रभावित हुए prior knowledge, prior learning, previous knowledge द्वारा. It is any activity that leaves or more or less permanent effect on later activity. तो change in behavior माने जहाँ हमें पढ़ीचे जहाँ हमें जानीचे सेटा होचे हमरो behavior. चेंज इन बिहेवियर कौन जो किसी नुआ जानिले नुआ सिचुएशन लाइफ रे फेस कले जो मोडिफिकेशन आसिला दैट मोडिफिकेशन इज ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस आवर परसेप्शन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड से बिहेवियर चेंज बा मोडिफिकेशन को ही लर्निंग कहा जाए. 6, लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट. लर्निंग हेल्प्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ एडिक्वेटली टू द न्यू सिचुएशंस. मोस्ट लर्निंग इन चिल्ड्रन कंसिस्ट्स इन modifying, adopting and developing their original nature. In later life, the individual acquires new forms of behavior. So learning is adjustment. New situation सहित आम adequately adjust करि परिबा as an individual. आमर nature को आमर behavior को modify करि परिबा in order to adopt with the new situation. ताको आम कहूचे learning is an adjustment. Number 7, it comes about as a result of practice. It is the basis of drill and practice. It has been proven that students learn best and retain information longer when they have meaningful practice and repetition. तो बार बार करिबा meaningful concept बुझी की and repeatedly करिबा ता द्वारा कौन हुए learning हुए. So it comes about as a result of practice. Every time practice occurs, learning continues. Point number 8, learning is a relatively permanent change. After a rat wake up from his nap, he still remembers the path to the food. Even if you have been on a bicycle for years, in just a few minutes practice you can be quit. अच्छा एठी कहिचे learning is relatively permanent change means आम जदि साइकेल शिखीचे पिला बेले चलैथिले आ चलैने पाखापाखि 10 वर्ष पर्यंत बाइक चलाउथिले कार चलाउथिले तापर सडनली साइकेल धरले भी आम चलै पारुचे. गोटे मूषाटे को बाहर नहीं कि कुआड़े भी आम छाड़ीदे सी रास्ता देखिए फुड पाक को पलि आसुची बा घर को पलि आसुची. ये सब ये हूँ परमानेंट चेंज. ये हूँ आम लर्न जहाँ करें जदि बहुत दिन पर्यंत न कले आम माइंड रे थाए आम करूँ. लर्निंग एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज नेवर एंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट each stage. The learner acquires new visions of his future growth and new ideals of achievement in the direction of his effort. According to Woodworth, all activity can be called learning so far as it develops the individual.
जिते बेला पर्यंत इंडिविजुअल डेवलपमेंट होउची सेते बेला पर्यंत आमे ताकू लर्निंग कहिबा तो डेवलपमेंट ग्रोथ सहित ये रिलेटेड आमको आग को नबा नुआ जिनस अचीव करेबा ग्रो करेबा रे लर्निंग रो इम्पोर्टेंट रोल रही निज हिसाब रे भी लिखि परिबा बट इम्पोर्टेंट ये जे बोल्ड पार्ट को गोटे हिसाब रे मु कहबी माइंड रे फिक्स करबा को पड़िबो ओके 10टा पॉइंट देइछि मु लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ताकू डायरेक्टली आमे ऑब्जर्व करि परिबानी द ओनली वे टू स्टडी लर्निंग इज थ्रू सम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एक्चुअली वी कैन नॉट ऑब्जर्व लर्निंग we see only what proceeds performance the performance itself and the consequences of performance तो परफॉर्म केमती करूची से ही लर्निंग जाना पड़े लर्निंग डायरेक्टली आम देखिपारे जे लर्न होइछि ना नाई इट इज रिफ्लेक्टेड इन वन्स बिहेवियर वन्स वे ऑफ थिंकिंग वन्स एक्टिविटीज तो ये किसी इंपोर्टेंट जिनस तो टाइप्स ऑफ लर्निंग्स रे जदि आम ये पॉइंट को भी लिखा नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग रे टाइप्स ऑफ लर्निंग चलो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट्स टिके हाईलाइट करके आम लिखिदे पारिबा जे मोटर लर्निंग कौन मोटर लर्निंग फाइन मोटर ग्रॉस मोटर दुईटा टाइप ग्रॉस मोटर रे बड़ मसल यूज हुए फाइन मोटर रे छोट छोट मसल यूज हुए तो ये तो जिनस तो मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ रिफर्स टू मोटर एक्टिविटीज द इंडिविजुअल हैज टू लर्न देम in order to maintain his regular life. For example, walking, running, skating, driving, climbing, etc. ये सब जहाँ भी एग्जाम्पल देती है सब ग्रॉस मोटर देती फाइन देनी राइटिंग जो था फाइन मोटर स्किल था ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो मसल सहित रिलेटेड सो मोटर लर्निंग गट इट वर्बल लर्निंग तापर दुई रे दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक द कम्युनिकेशन डिवाइस वी यूज signs, pictures, symbol, words, figures, sounds, etc. are the tools used in such activities. We use words for communication. तो verbal learning रे आउ किछि कहबार नै clearly sentence जहाँ लिखाई छै से तक जणै दउछि जे ये language सहित related and indirect verbal learning रे मध्ये एठी symbols आमे करूछे एटा को आमे जदी reasoning हिसाब रे देखिबा non verbal हो symbol टा बट एठी आमे कहि परिबा जे communication device ओके तो कम्युनिकेशन करिबार जहाँ को यूज करूँ वर्बल लर्निंग कहीपर ओके चलो कम्युनिकेशन सहित रिलेटेड कंसेप्ट लर्निंग इट इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग व्हिच रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग रीजनिंग इंटेलिजेंस कहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो भाविबा को पड़ो रीजनिंग सहित रिलेटेड थिंकिंग क्वालिटी सहित रिलेटेड इंटेलिजेंस सहित वी लर्न डिफरेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी ए डॉग एंड अटैच द टर्म डॉग वी लर्न दैट word dog refers to particular animal. Concept learning involves two processes, abstraction and generalization. This learning is very useful in recognizing, identifying things. तो जे कौन जिन को चिन्हवा जानिबा बाछिबा concept learning हमको हेल्प करे. Next 4 जो देखिबा discrimination learning to differentiate between stimuli and showing an appropriate response to these स्टिमुली इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग माने से जिनस से स्टिमुली सिचुएशन अनुसार अलग अलग रेस्पॉन्स बा अलग अलग स्टिमुली एंड तापे अलग अलग रेस्पॉन्स ताकू फाइंड आउट करबा ताकू डिफरेंशिएट करबा ये होची डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एग्जांपल साउंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बस रो साउंड सुनले में जानिबा कार आछी एम्बुलेंस रो साइरन ये सब जिनस को सुनी के हमें जानि परबा डिफरेंशिएट करि परबा किंबा आमे कहवा जे काहाकू केमती बिहेव करबा मनकर स्टिमुली हिसाब रे आमे नबा जदि टीचर हमरो टिके कानटा को धरि देला आमे को हिसाब रे रिएक्ट करबा बट फ्रेंड जदि कान धरि देला को हिसाब रे तो स्टिमुली सेम अछि बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आमे डिस्क्रिमिनेट कले ये टीचर टिके मुह तळकू कर दबा कान जदि धरि दैछंती किछि मु भूल करिछि मानि जिबा फ्रेंड कान धरि देला ता कान को धरिबा कोन मोड़ी भी दबा हां अन दरकार पड़ले दीटा पकई भी दबा सो इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग फरक करूचे ओके नेक्स्ट अला लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल्स लर्न सर्टन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइंस मैथमेटिक्स ग्रामर एटसेट्रा इन ऑर्डर टू मैनेज देयर वर्क इफेक्टिवली तो रूल्स रेगुलेशंस से सब जानिबा प्रिंसिपल्स थ्योरी दीज प्रिंसिपल्स ऑलवेज शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कंसेप्ट एग्जांपल फार्मूला लॉ एसोसिएशन कोरिलेशन बुझला ना ये होचे लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग This is a higher order learning process. This learning requires the use of cognitive abilities like thinking, reasoning, observation,
imagination, generalization ये सब problem solving रे निहाती दरकार. This is very useful to overcome difficult problems encountered by the people. Okay, problem solving सरला. Attitude learning. Attitude is a predisposition which determines and directs our behavior. We develop different attitudes from our childhood about the people, objects, and everything we know. Our behavior may be positive or negative depending upon our attitudes. The attitude केमती आम attitude पिला बेलू केमती डेभलप होइछि को टाइप रो बिहेवियर आम को टाइप रो सिचुएशन रे देखेबा यही attitude. The attitude learning यार पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट रहुछि आम बिहेवियर ऊपर. बिहेवियर पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे एज पर आवर attitude. एग्जांपल attitude ऑफ नर्स टुवर्ड्स हर प्रोफेशन, पेशेंट्स एटसेट्रा. तो गोटे नर्स रो को टाइप रो attitude पेशेंट प्रति रहिबा दरकार, केमिति से सेवा करवा दरकार, ता प्रोफेशन प्रति को टाइप रो डेडिकेशन रहिबा दरकार, गोटे टीचर रो केमतिया बिहेवियर होबा दरकार स्टूडेंट्स को प्रति, ये सब एटीट्यूड डिसाइड करे. अच्छा ठीक अच्छे. तो ये तो थिला टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. बट किसी इंपोर्टेंट पॉइंट को एठी मु हाईलाइट करिछि जोगुडा हम पई दरकार आमे लिखि परिबा थ्योरीज ऑफ लर्निंग रे भी और नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग रे भी. बट ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी ये गोटे पॉपुलर लर्निंग थ्योरी थंडाईकर या विषय में आगुरी भी कही डिटेल रे थंडाईकर थ्योरी. बट स्टिल एठी टिके हाईलाइट करूछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. Thorndike, Edward Lee Thorndike, he argues that learning takes place through trial and error method. माने बार बार करी करी शिखिबो. सेल्फ लर्निंग रे केवल एटा हुए. ट्रायल एंड एरर टा सेल्फ लर्निंग किए गाइड कले ट्रायल एंड एरर हुए, निजे निजे कले ट्रायल एंड एरर हुए, बारंबार भूल हुए और से थ्रू आमे शिखु. अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न. द एसेंस ऑफ द थ्योरी इज एज द ट्रायल्स इंक्रीज द एरर डिक्रीज. जिते अधिक आम ट्राए करवा सेते कम एरर एंड फाइनली आम परफेक्टली करिपरिबा. Thorndike studies the character of trial and error learning in a number of experiments on cat using a box which is called puzzle box. Puzzle box experiment विषय मु डिटेल कहिछि. ओके देखि परिबो से वीडियो Thorndike करो एबे रिसेंटली जाइछि एंड सर्च करके पाई परिबो. मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक भी दे देबी. In one of the experiments a hungry cat was placed in a box and the door was closed which could be opened by pressing a latch. तो कौन सी स्विच थिबो किमा लीवर बा कौन सी गोटे जगह थी जो प्रेस कले ही डोर खोली जीवो. ए फिश वाज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स इन द प्लेट. द कैट कुड सी द फिश. तो माछटा ताकू देखा जाउछि ता पाखरे गोटे एमतिया जगह अछि जोटा को प्रेस कले गेट खोली जीवो एवं से माछ खाई परिबो. तो सी कौन होउछि ट्रायल करि चलछि एंड वंस ता गोड़ो पड़ी गला एंड सडनली डोर खोली गला से खाई देला. तापर सेमिति से पुणी फुड रखागला एंड कंटिन्यूअसली ट्राए कर चलला बट हेलानी. पुणी ट्राए कला कौ जगार एक्चुअली प्रेस कले होउछि से जानि नथिला. सो बार बार ट्राए करी करी फाइनली मारिदेला. सो नेक्स्ट डे रे से इजिली से बटन को पाइजिवो बा से जगह को पाइजिवो जोटू को प्रेस कले गेट खोलिवो. तो ग्रेजुअली इजियर हे जीवो बा एरर डिक्रीज हे जीवो ट्रायल्स जेते अधिका हे जीवो. ओके क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप मध्य गोटे इंपोर्टेंट जिनस जोटा इवान पी पावलोव देइथिले. डॉग ऊपर एक्सपेरिमेंट. रशियन साइकोलॉजिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1904 फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. बेल आउ डॉग को खाइबा को दबा एंड सलाइवा सिक्रेशन. क्लासिकल एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग तक आम कहूँ. सेमती ओपरेंट कंडीशनिंग B.Ed स्किनर देइथिले. ये होचंती अमेरिकन. पावलोव होचंती रशियन, अमेरिकन होचंती B.Ed स्किनर. एंड स्किनर एक्सपेरिमेंट करथिले पिजन एंड रैट ऊपर. ओके एगुड़ा टिके टिके जानिबो माने डिटेल रे देखि दबो भी मोर वीडियोज मध्य अछि या ऊपर. रीइंफोर्समेंट व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो रीइंफोर्समेंट को इंपोर्टेंस किए देथिले ओपरेंट कंडीशनिंग बा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो एक्सपेरिमेंट करथिले B.Ed स्किनर. एटी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट is used in reward training. Negative reinforcement like punishment is used to stop undesired response or behavior. रिवार्ड दबा केतेबेले जेतेबेले आमे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पाउछ बा भलो काम करूछ एंड पनिशमेंट दबा इन ऑर्डर टू स्टॉप अनडिजायर्ड बिहेवियर बा रेस्पॉन्स. ओके जहाँ को आमे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहूछ. ओपरेंट कंडीशनिंग इज यूजफुल इन शेपिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर एंड ऑल्सो इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर. लर्निंग बाय perceiving the relationship in the scene and understanding the situation is insightful learning. तो insightful learning टा किए देथिले साइकोलॉजिस्ट
उल्फ गैंग कोहलर ओके उल्फ गैंग कोहलर देइथिले एंड सेटा होची गेस्टाल्ट थ्योरी ताको कहा जाए परसेप्शन ऑफ ए सिचुएशन एज ए होल गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एटा इंपोर्टेंट पॉइंट परसेप्शन ऑफ ए सिचुएशन एज ए होल गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग देन सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट माने एटा प्लस एटा ताको पार्ट्स करके बुझीबा अपेक्षा पूरा होल जिनस को बुझीबारे बेटर कनसेप्चुअल आम करिपरिबा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पारिबो दैट इज द सिचुएशन व्यूड एज ए होल विल डेफिनेटली लुक डिफरेंट फ्रॉम दैट व्यूड थ्रू इट्स पार्ट्स तो पार्ट करके आड करके जितेबाला देखा सी अलग देखा किंतु एज ए होल जितेबाला सिचुएशन टाको आम बुझीबा सेतेबाला तार मीनिंग अलग माने एज ए होल आम बेटर अंडरस्टैंडिंग पाई परिबा कोहलर गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले चिंपांजी को लेकिन कल्ड सुल्तान जार ना थिला सुल्तान इन हिज एक्सपेरिमेंट सुल्तान वाज पुट इन ए केज and a banana was placed at some distance outside the cage. Then the chimpanzee was given 2 sticks. Dita badi taku diya gala. So constructed that one stick could be fitted into another and make the stick longer. तो दीटा छोटो छोटो बाड़ी दिया जाइछि किंतु डिस्टेंस रे अछि बनाना तो ये कौन कला दीटा जाक को जोड़िबो ओके द हंग्री सुल्तान किए जो चिंपांजी को नेकी एक्सपेरिमेंट करा जाइतला फर्स्ट अटेम्प्ट्स with its hand to get the banana then he took one of the stick and tried to pull the banana nearer then tried with other stick but failed to reach it by this effort the chimpanzee became tired and left the attempt to reach the banana and started playing with sticks तो banana कथा भूली गला अब हबनी बोली भाबिला दीटा स्टिक अच्छी and खेलिवा स्टार्ट कर दला while playing so one of his sticks got fitted into the other and the stick become lengthier तो दीटा जाक लगी गला एवं लंबा हो गला immediately sultan become elted and pulled the banana with this long stick and ate it this sudden flash of idea to reach food with longer stick is called insight by Kohler राइट एटा कोहलर थ्योरी डिटेल आइडिया यहाँ गोटे आम कहीपर सुल्तान जो चिंपांजी उपर करते दीटा बाड़ी देते दूर में गोटे बानाना रखी केज भितर था चिंपांजी बाहर की जापरन तो फास्ट हाथ में ट्राए कला बानाना पाखे पहुँची पारानी स्टिक ट्राए कला दीटा जाक स्टिक अलग अलग हिसाब से ट्राए कला पहुँची पारानी स्टिक रे खेलुला एंड सडनली स्टिक जॉइंट होगी से देखला जो लंबा होपर से ट्राए कला एंड रिस्ट विथ द बानाना एंड बानाना पाखे पहुँची खाई पारा लंबा स्टिक रे बा स्टिक दीटा को जोड़ी ताकू कहले कोहलर कौन इनसाइट जोड़ा इनसाइटफुल लर्निंग आम कहे लर्निंग बाय इमिटेशन या पर सारी दवा ओके इट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग मेनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स फॉर एग्जाम्पल द वे वी ईट ड्रिंक वॉक टक ड्रेस एटसेट्रा आर ऑल लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स अन्य मानक देखिक आम करुचे वी ऑब्जर्व एंड वॉच what and how other people do certain activities and imitate them and तांको कॉपी करुचे आम लर्निंग बाय इमिटेशन नॉर्मली चिल्ड्रन मानक बहुत अधिक देखा जाए साइकोलॉजिस्ट लाइक मिलर एंड डॉलर्ड have tried to show that the tendency to imitate is itself a learned response and if reinforced the individual will be more likely to continue to imitate जदि reinforcement दबा ताकू ताहले सी अधिका अधिका आहुरी कौन करिवो इमिटेट करिवो किए कहितले साइकोलॉजिस्ट मिलर एंड डॉलर्ड सो ये थिला आज डिस्कशन यहाँ हूँ क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन आसीपर ओडिशा एजुकेशन सर्विस रे B.Ed एंट्रांस सॉरी B.Ed जो मैंने करूँ एग्जाम रे M.Ed जो मैंने करूँ एग्जाम रे ये टाइप क्वेश्चन आसीपर व्हाट इज लर्निंग राइट द नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग ओके लिखब निजे एंड वेल प्रिपेयर भल से कर नोट्सटा बनइब थैंक यू वेरी मच लाइक कमेंट शेयर कर जदि यू थिंक दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू subscribe and hit bell icon if you are new to our channel thank you for watching till the end लास्ट पर्यंत देखि धन्यवाद थैंक यू वेरी मच निश्चित जदि एतिक आग्रह आम रखा निश्चित जेकोसी टार्गेट आमर अच्छी क्वालिफाई कर लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक्स लॉट हैव ए ग्रेट डे जय जगन्नाथ।